Good morning, everyone. See, today we will start our new chapter. Sixth. Chapter number 17, that is data handling. Okay, and this is our lecture first of chapter number 17. So, see. What is data handling, and so many things are given here, frequencies, tally, this all we will study today. So see, first of all we will study about frequency. What is frequency? Let us study the peak hour traffic at a road junction to share it with the town or city administrators. This will help them develop the junction for easy traffic follow. See, one table will be given to you, that anything will be given, number of students or number of what is the given weight there. Through this you have to find the frequency and tally. So see, in question number first of all, see what is tally. Tally. Just see the number of students are given to you. 2 students are given. Number of students is equal to 2. Then how you can write in tally the 2? Tally में आपको 2 कैसे लिखना है? That is your 2. If they are asking about 3, then 3 will be written as like this. They are asking of 4, then 4 will be written as this. If they are asking of 5, then 5 will be written 4 तो आपको लेना ही है. उसके बाद 5 में आपको एक डायगोनल बनानी है. यहाँ पे ये हो गया आपका 1 2 3 4, एक ही अपने जो क्रॉस किए इसको पे, ये हो गई आपकी 5th वन. इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट 7, तो 5 तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 एंड 5, then 6 and this is your 7. If they are asking about 1, then 1 will be written as single. If they are asking about 10, how you will write 10? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. This will be written as 10. So you have to count the what is the given number here, number of students, number of animals, number of classes, anything. If it is given, you have to find the number of the given thing, then you have to write the tally as like this. Now what is frequency? If you have made here tallies, then frequency means the number you have to write this in numbers. See, here it is given in tally, here you have to write in numbers. This is 2, here it is 3, here write 3, here it is 4, in frequency you have to write in number 4. Here it is 5, write here 5, here it is 7, write here 7. This is known as frequency and this is known as your tally. So see, see exercise 17a, when you are doing exercise you will understand it properly. See, first of all, see one more thing I would like to explain you, what is secondary and primary data. Primary data means primary data and secondary data. Now see, primary data means there are 2 types of data, that is one is primary and second one is secondary. When data is collected directly from the source, when data is collected directly from the source, directly from the source, this is known as your primary data. Now directly from the source means if Mr. Sen asks the students to give their choices from the particular location they would like to go. Just suppose someone asked you that where you would like to go, it means this is your choice, you are directly saying your choice. This is called your primary data. And secondary data means you have to search anything from anywhere. Just suppose you have I have given you the project and I told you that you have to search it search from internet. So this is known as your secondary data. Okay, that you are searching from newspaper, from internet or from somewhere else. This is known as your secondary data. So we will study this secondary data
information about the weather or accommodation facilities. He may collect this from the internet, travels, browsers, newspaper, magazines. Information collected from newspaper, internet और फ्रॉम समवेयर एल्स. नॉट डायरेक्टली मीन्स आप डायरेक्टली कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो. फॉर डेट यू हैव टू सर्च फ्रॉम एनीवेयर. दिस इज नोन एज योर सेकेंडरी डाटा. एंड प्राइमरी डाटा मीन्स डायरेक्टली यू आर सर्चिंग, डायरेक्टली यू आर आस्किंग फॉर योर चॉइस. दिस इज नोन एज योर प्राइमरी डाटा. समवेयर एल्स. ओके, आया समझ में प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. नाउ सी वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. See exercise 17a. Your first question is data collected from different sources are given below. Identify the primary data and secondary data. Now here some of the data are given here. You have to identify whether it is a secondary data or primary data. See, first of all, data from a public library. Library means you have to go to library, then you have to search something. It means directly you cannot ask for your choice. It is known as your secondary data. Okay, now second one, the favorite chocolates of the student in your class. Means if I am asking that which is your favorite chocolate, then you are directly saying me that this is Dairy Milk is my favorite chocolate. It means directly you are saying your choice. It is known as your primary data. Okay, now see third one, data from a website on the internet. Means if you are asking about the data on the internet, it means it is your secondary data. Okay, now see fourth one, the favorite authors of the student in your class. Okay, favorite author means I am asking about your favorite author. It means you are saying it directly to me. So this is your primary data. Okay, now see fifth one, the data from an experiment you conducted in the science laboratory. Okay, you are doing an experiment and then you are collecting some data. This is known as your primary data. Okay, sixth one, an article from a newspaper. You are searching an article from a newspaper. This is your secondary data. Seventh one, weather report from a TV channel. Okay, weather report you are asking, you are seeing on a TV channel. This is your secondary data. Okay, so this question you have to note in your notebook. Don't ask me again and again that ma'am can we write in our book. Okay, so this question you have to write in your classwork copy. Now see question number second. See, Seema wanted to find out the number of students in her class who have pets and also the types of pets they have. She found that 24 of her classmates have pets. Given below is the information she collected. Prepare a frequency table using tally marks. Now see, she has pets. Which are the pets? She has cat, rabbit, dog, parrot, pigeon. Okay, five of the pets she has, and the total number of pets are given here that you have to find, and total number of classmates are there 24. Now see, you have to find the total pets given here. In first of all you have to write in tally, after that you have to write in frequency. Now see, first of all, what is the number of cats given here? Okay, that you have to write. After that you have to write the tallies. After that you have to write the frequencies. So first of all, make one table here. Number of pets, then tally, then here frequency. Okay, so number of pets you can write, or directly you can write pets. First of all cat, then dog, then rabbit,
then pigeon. Okay, and one more is given here. Parrot. Okay, this is your parrot. Now see, first of all is they are asking about the cat. What is the number of cats given here? Number of cats means you have to count down the number of cats. 1, 2, 3, 4. See, number of cats are given here 4. 4 means how you can write in tally 1, 2, 3, 4. In frequency you can write here directly 4. Now see, number of dogs you have to find. What is the number of dogs given here? Number of dogs that you have to find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now see, number of dogs are given here 7. Now how you can write dogs in tally? 1, 2, 3, 4, 5. Up to 5 you have to write here. Don't write like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It will become your wrong. Okay, 5 तक आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद 6 and 7. Now see, number of rabbits. What is the number of rabbits given here? This 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, number of rabbits are given here 6. Then write here 6. Number of rabbits, how you can write? 1, 2, 3, 4, 5. This is your 5. Then 6. Now pigeon. Number of pigeon is given here. That is 3. So 1, 2, 3. Then write here 3. Now parrots. Number of parrots remaining are, sorry, here pigeons are 4 and number of parrots it is given here 3. So write here 4 and here 3. Now in frequency you have to write the total number of the pets. So 4 plus 7 that is 11. 11 plus 6 that is 17. 17 plus 3 20 to 24. Okay, so in frequency you have to put here total. Then tally you have to write like this, and cats, rabbits, dog, and this for all this you have to find the number of the pets. Now see question number 3. See what is given in question number 3. The music group of class 6 of St. George School performed a musical program. The students of class 7 were asked to grade the program on a scale of 1 to 5, where 1 represents excellent. Write here 1, solution number 3. 1 is for given excellent students. Okay, then 2 is given for good. Okay, then 3 is given for an ordinary performance, an ordinary. Okay, then 4 is given for not good. Then 5 is given for very poor. Okay, now you have to calculate their tallies and frequency and what is the number of students given here, that you have to count. Now 4 is given for not good, 1 is given for excellent. First of all, excellent you have to find. How many students are given here excellent? Now see. So write here number of students, or don't write number of students because already the number is given here. You just have to write what is their performance. Okay, now see, write here performance, write here tally, then frequency. Okay, now performance, first of all it is given excellent performance, then second one it is given good performance, third one an ordinary, fourth one not good, then fifth one very poor.
Okay, now see how many of them were given excellent performance, that you have to find. Now from these numbers you have to search one, how many times one is given. So one is given here, one is not given here, so write here tally will not come here, frequency is here 0 of the excellent students. Now good, how many times is the good given here, that is you have to count 2, how many times 2 is given here. Now see 2 कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 दे रखा है आपको, 12 के बाद है क्या और नहीं, इट इज़ गिवन ओनली 12 टाइम्स. नाउ सी गुड कितनी टाइम्स दे रखा है, दैट इज 12 टाइम्स. नाउ 12 को आपको टेली में लिखना है. सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 will become your 10 11 and 12. Now an ordinary performance, how many have given ordinary performance, the number is given here 3. Now you have to find 3 कितनी बार दे रखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ओके, ऑर्डिनरी आपको दे रखा है यहाँ पे 21 टाइम्स, सो राइट है 21. अब 21 आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना हो गया 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और रिमेनिंग इज 1. 5 plus 5 10 15 20 and remaining one is 21. Now how many have given that not good performance, not for not good number 4 is given. So 4 आपको काउंट करना है, 4 कितनी बार दे रखा है यहाँ पे. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, लास्ट दे रखा है 31. ओके, तो 31 टाइम्स आपको नॉट गुड दे रखा है, तो राइट हियर 31. देन 31 आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये कितना हो गया आपका 10 20 25 3 4 5 एंड रिमेनिंग इज 1. नाउ वेरी पुअर परफॉर्मेंस कितने बच्चों का है, वेरी पुअर के लिए आपको दे रखा है 5. सो फॉर 5 यू हैव टू काउंट 5 कितने दे स्टूडेंट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, तो वेरी पुअर आपके लिए 16 स्टूडेंट्स. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, एंड वन मोर इज दिस इज योर 16. नाउ सी अब इसका आपको टोटल करना है, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1 3 + 1 4 + 6 10, रिमाइंडर 1 2 4 5 80. So number of students are 80 already given here. This is the frequency you got here 80. Now see question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन है. आपको क्या मेजर करना है, एक्यूरेसी फाइंड करनी है उसमें. सेंटीमीटर्स में ऑलरेडी गिवन है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40 हियर. सो यू हैव टू measure their height. So solution number 4. Okay, question number 4. Now see heights in centimeter. Write here tally, then here frequency. Now see heights in centimeter. First of all 142 सेंटीमीटर. कितने स्टूडेंट्स की 142 सेंटीमीटर हाइट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट्स की आपकी 142 हाइट्स है. तो यहाँ पे तो आप लिख दो सबसे पहले 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7.
अब देखो नेक्स्ट वन 147 सेंटीमीटर। 147 कितने स्टूडेंट्स की है? 3 4, दैट इज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो 5 आप ऑलरेडी लिख सकते हैं यहाँ पे 5 हियर 5। अब देखो 145 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स की हाइट है? तो यू हैव टू फाइंड 145। ये हो गई 7 स्टूडेंट्स की, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप लिख दो 7। अब 144 सेंटीमीटर। अब आप इसको इधर उधर ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर डेट व्हाट यू आर राइटिंग, यू जस्ट हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट फ्रीक्वेंसी हियर। नाउ सी 144 कितने स्टूडेंट्स की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो सी 10 स्टूडेंट्स की 144 5, ये हो गया आपका 10। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका? 143 सेंटीमीटर। 143 कितने स्टूडेंट्स की है? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स की 1 2 3 4 5। तो ये हो गई इसकी 5। अब क्या बचा है आपका यहाँ पे? 146 सेंटीमीटर। 146 कितने स्टूडेंट्स की हाइट है? 6 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आप लिख दो 6। अब फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लो, 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7 28 28 प्लस 5 33 33 प्लस 7 दैट इज 40। ओके, तो 40 स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे आपके टोटल, और फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपके टोटल। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग इज द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स। हियर स्टैंड्स A stands for mango. A is given here for mango. B, C, D and E. E is given for grapes. Okay. D is given for bananas. C is given for oranges and D is given for apple. Okay, now you have to find how many students favorite fruit is mango, किसका एप्पल है, किसी का ऑरेंज है, किसी का बनाना है, किसी का ग्रेप्स है। दैट यू हैव टू फाइंड हियर। नाउ सी सॉल्यूशन नंबर 5। ओके, फ्रूट, टेली एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ सी फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगो, देन एप्पल, देन ऑरेंज, देन बनानास, देन ग्रेप्स। ओके, देन टोटल। ओके, अब मैंगो कितने स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है? अब टोटल स्टूडेंट्स आपको 50 दे रखे हैं। आउट ऑफ 50 में से मैंगो पसंद है 12 स्टूडेंट्स को। अब 12 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है, तो यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल 12। राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो और आप अब एप्पल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? तो एप्पल के लिए काउंट काउंट करो पहले 1 2 3। एप्पल के लिए आपको पहले बी दे रखा है, तो बी को आपको काउंट करना है कि कितनी बार बी दे रखा है। ठीक है, तो मैंगोज पसंद है 13 स्टूडेंट्स को। राइट है 13। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया, 11 12 13। अब ऑरेंज कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? वो ऑरेंज के लिए आपको फाइंड करना है। दैट इज ऑरेंज पसंद है 6 7 8 9। ओके, ऑरेंज पसंद है 9 स्टूडेंट्स को। फॉर ऑरेंज यू हैव टू काउंट डाउन द सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दिस इज 9। नाउ बनानास,
अब बनानास कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? बनाना पसंद है 10 स्टूडेंट्स को, तो राइट हियर 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? रिमेनिंग आर ई। अब ई कितने बचे हुए? ओनली 6 ईज आर रिमेनिंग, दैट इज ग्रेप्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल, अब इसका टोटल लगा लो आप। अगर ये 50 आ रहा है इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। सो 3 + 2 5, 50। ओके, द फ्रीक्वेंसी इज गिवन हियर 50 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी चार्ट। अब आपको वेट दे रखा है, 30 स्टूडेंट्स का वेट आपको गिवन है। अब यू हैव टू वेट मेक अ फ्रीक्वेंसी चार्ट फॉर दिस थ्रू टेली। Now see, first of all, write here weights. This is question number 6. Weight, then tally, then frequency. Okay. अब देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट आपको दे रखा है, तो फर्स्ट सबसे छोटा वेट कौन सा दे रखा है? 39। अब 39 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, दैट यू हैव टू फाइंड। नाउ सी 1 2 3 4। नाउ सी 39 kg के ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं, तो राइट हियर 4, 1 2 3 4। अब देखिए नेक्स्ट वेट है आपका 40 kg। ओके, 39 kg से बड़ा है 40 kg। अब 40 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 1 2 3 4। ओके, 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, राइट हियर 4। अब नेक्स्ट है 41 kg। ओके, 5 स्टूडेंट्स है, राइट ईयर 1 2 3 4 5, राइट ईयर 5। 42 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? अब देखते हैं 42 kg के। इज 7। ओके, तो राइट ईयर 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट ईयर 7। 43 kg के, ओके 43 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 4 5। ओके, राइट हियर 5 एंड 1 2 3 4 5। अब देखिए 44 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं? काउंट करो। 44 kg के हैं ओनली 3 स्टूडेंट्स, तो राइट हियर 3, राइट हियर 3। 45 kg के ओनली 1 स्टूडेंट इज फॉर 45 kg, तो राइट हियर 1, राइट हियर ऑल्सो 1। 46 kg का काउंट करो। 46 kg का भी मुझे यहाँ पे 1 ही दिखाई दे रहा है। यस, ओनली 1 इज देयर, तो राइट हियर 1 1। अब इसको आप काउंट कर लो। 25 28 29 30। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी आर देयर? 30 ऑलरेडी गिवन इन द frequency. So in this way you have to find your tally and frequency. Okay, so we have completed this exercise. Okay, next lecture we will start our next exercise 17B. Okay, thank you.